Hi, good evening, everyone. I hope I'm audible and my screen is visible. So, if everything is fine, I think we can start with today's daily drill on reading comprehension. Right, so we have two passages today, and both of them are fairly challenging in nature. One is absolutely a nightmarish passage, possibly the most difficult passage in that year's VARC section. And the other one is, of course, an easier passage to read, but then it goes into slightly uncharted territory. वो थोड़ा सा difficult हो जाता है to read and understand. So, what I will do is I'll just go through both these passages. We'll try to answer the questions and then we will see how that goes. Right. So, I'll just switch on the chat so that I can see your comments. Okay. Oh, yeah. I think we are good to go. Everything seems to be fine. So, let's start with today's passages on reading comprehension. All right. So I'll read the first passage entirely as has been the case. We'll read the entire thing together and then we will try to see what happens in terms of the questions. तो एक बार देख लेते हैं what exactly is happening here. Right. So let's start with the first passage. Let's read this and then see where we go from here. Right. We cannot travel outside our neighborhood without passports. So we cannot go outside our neighborhood without passports. Fairly straightforward. We must wear the same plain clothes. We must exchange our houses every 10 years. We cannot avoid labor. So all these things hint towards the fact that there are a lot of restrictions that are imposed upon us. We all go to bed at the same time and so on. We have religious freedom, but we cannot deny that the soul dies with the body since, but for the fear of punishment, they would have nothing but contempt for the laws and customs of the society. तो इसका मतलब क्या बना? We have religious freedom, yes, but तो जो बॉडी के अंदर सोल है that dies with the body, right? Since why does it die with the body या क्या होता है? But for the fear of punishment, अगर अपने को punishment का डर नहीं होता, right? They would have nothing but contempt for the laws and customs of the society. We would have disliked the laws and customs of the society. अगर हमारे पास fear of punishment नहीं होता तो ठीक है सो एट अ वेरी प्योर लेवल अगर हम लोग के सोल में से फियर निकाल दिया जाए वी विल नॉट रियली हैव वेरी पॉजिटिव हाउ डू आई पुट इट वी विल नॉट रियली हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉस एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी in Moore's time, for much of the population, given the plenty and security on offer, तो Moore, there is some person called Moore, we don't know who this person is, but है कोई तो, given the plenty and security on offer, काफी सारा plentifulness था, security था, बहुत सारी चीजें थी, such restraints would not have seemed overly unreasonable. Would not have seemed unreasonable. अब यहाँ पे there is a very easy way to confuse you using double negatives. Would not have seemed overly unreasonable मतलब not को कट कर देंगे un को कट कर देंगे would have seemed overly reasonable मतलब would have seemed reasonable in a way तो बहुत सारी चीजें थी प्लेंटी बहुत सारे चीजों का प्लेंटीफुलनेस था सिक्योरिटी थी तो वहां पे ये सारे रेस्ट्रेंट्स वुड हैव सीम्ड रीजनेबल ठीक है फॉर मॉडर्न रीडर्स हाउएवर यूटोपिया अपीयर्स टू रिलाई अपॉन रिलेंटलेस ट्रांसपेरेंसी द रिप्रेशन ऑफ वैरायटी ठीक है ट्रांसपेरेंसी हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एवरीबॉडी शुड नो एवरीथिंग रिप्रेशन ऑफ वैरायटी वैरायटी का मतलब कोई भी बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करेगा फ्रॉम एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म्स लेट्स से एंड द कर्टेलमेंट ऑफ प्रिवेसी प्रिवेसी को बहुत ज्यादा कर्टेल कर दिया कम कर दिया प्रिवेसी को यूटोपिया प्रोवाइड सिक्योरिटी बट एट व्हाट प्राइस इन बोथ इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिलेशंस इंडीड इट सीम्स पेरिलसली डिस्टोपियन तो अब यूटोपिया से हम लोग बोल रहे हैं डिस्टोपियन हो सकता है सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ अगर देखा जाए दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी डेंस पैराग्राफ अगर देखते हैं तो अब डेंस पैराग्राफ क्यों है बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव बीन टोल्ड दैट यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है बट देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दैट एग्जिस्ट हमको बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है बिकॉज द सोसाइटी डिक्टेट्स दीज थिंग्स एंड दे एक्सपेक्ट अस टू डू थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट ठीक है दैट इज वन थिंग बट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अगर मोर के टाइम में देखें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गिवन द प्लेंटी एंड सिक्योरिटी ऑन ऑफर दीज रेस्ट्रेंट्स वुड हैव सीम्ड रीजनेबल तो अपने को लगता है कि ठीक है चलो यार मतलब इतना ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हाँ ठीक है सह लेंगे थोड़ा वी विल हैव रिस्ट्रेंट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल बट मॉडर्न रीडर्स के इसमें यूटोपिया अपीयर्स टू रिलाई अपॉन रिलेंटलेस ट्रांसपेरेंसी मतलब अभी तो यहाँ पे प्लेंटीफुलनेस भी नहीं है सिक्योरिटी भी नहीं है इज व्हाट इज इंप्लाइड हियर तो ये सारी चीजें विल नॉट रियली बी एक्सेप्टेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये यूटोपिया जो हम लोग बोल रहे हैं, वहां पे अपने को ये डिस्टोपिया से ज्यादा लग रहा है। दिस इज अ बैड, जो भी मतलब इट्स अ बैड रूट, राइट? डिसफंक्शनल, डिस्टोपियन इन दिस वे, राइट? सो ये सारे डिस वाले जो होते हैं, दैट इज बेसिकली समथिंग दैट मीन्स बैड इन नेचर। तो डिस्टोपियन लग रहा है, यूटोपियन तो नहीं लग रहा। सच अ कंक्लूजन माइट बी फोर्टिफाइड, मतलब इसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं कंक्लूजन को, बाय एग्जामिनिंग सिलेक्टिवली द ट्रेडिशन व्हिच फॉलोज मोर ऑन दिस these points. This often portrays societies where it would be almost impossible for man to be depraved or wicked. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बी डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड मतलब चीजें मिल नहीं रही हैं, स्कार्सिटी है, लेट्स से कोई भी चीजें को प्रोहिबिट करके रखा हुआ है। दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ बीइंग डिप्रेव्ड और विकेड। तो जो ह्यूमन बींग्स थे ना, वो विकेड हो ही नहीं सकते थे इन दैट सोसाइटी, ठीक है। और वहां पे मैन को डिप्रेव होना, फील होना बहुत इम्पॉसिबल जैसा था, ठीक है। तो वहां पे इट विल बी फोर्टिफाइड बाय एग्जामिनिंग सिलेक्टिवली द ट्रेडिशन व्हिच फॉलोज मोर ऑन दीस। दिस इज अचीव्ड बोथ थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड मोर्स व्हिच अंडरपिन द कॉमन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, आगे जाके देखेंगे, लेट्स सी। द पैशंस आर रेगुलेटेड एंड इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड डिस्टिंक्शन आर मिनिमाइज्ड। सो पैशन को रेगुलेट कर देते हैं एंड इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कर देते हैं। मतलब इनइक्वालिटी नहीं होगा, एवरीबॉडी विल बी इक्वल, होमोजेनिटी होगा मोर और लेस। नीड्स, वैनिटी एंड एम्यूलेशन आर restrained often by prizing equality and holding riches in contempt, right? So riches मतलब जो भी people who are maybe earning a lot of money or they have a lot of wealth, they are accumulators, उनको contempt करते हैं, मतलब उनको we are looking at them in terms of contempt. We are not really appreciative of what these people are doing. The desire for public power is curbed. So public power हो नहीं सकता, कर्ब कर देते हैं उसको। मैरिज एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स आर ऑफन कंट्रोल्ड, सो इसको कंट्रोल करते हैं इस चीज को। इन टोमासो कैम्पेनेला's द सिटी ऑफ द सन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम पीस ऑफ लिटरेचर हियर, सिटी ऑफ द सन, द फर्स्ट ग्रेट लिटरेरी यूटोपिया आफ्टर मोर्स, रिलेशंस आर फॉरबिडन टू मेन बिफोर द एज ऑफ 21 एंड वुमेन बिफोर 19। सो रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं बेसिकली, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। कम्युनल चाइल्ड रियरिंग इज नॉर्मल। सो कम्युनल चाइल्ड रियरिंग मतलब सब लोग मिलके एज अ कम्युनिटी विल रियर एंड sort of lead to the I don't know how to put it, but growth of a child, let's say उसको educate करना, taking care of its needs, so ये सारी चीजें will happen in a communal setting. For Campanella this commences at age 2, so 2 से ही communal child rearing चालू हो जाएगा। Communal child rearing is normal, this is done, yeah. Greater simplicity of life, living according to nature is often a result, ठीक है। Greater simplicity of life, living according to nature is often a result. The desire for simplicity and purity are closely related, ठीक है। तो अब लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो मतलब कुछ तो हुआ, इसके लिए लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर पीपल आर डूइंग, नॉट बिकॉज दे आर रिस्ट्रेन्ड। The desire for simplicity and purity are closely related, ठीक है। People become more alike in appearance, opinion and outlook than they often have been. Unity, order and homogeneity, the word that we used earlier, thus prevail at the cost of individuality and diversity. तो यूनिटी होगा, ऑर्डर होगा, होमोजेनिटी होगा, सब एक जैसे होंगे, सब आराम से रहेंगे विदाउट रियली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ न्यूसेंस और chaos, बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी। मतलब इंडिविजुअलिटी कुछ होगा ही नहीं ना, इफ एवरीबडी इज द सेम then you can't really establish individuality. You can't say that I am different from the others because of this reason. Diversity, again diversity नहीं होगा because everywhere everything is uniform in nature. This model, as J.C. Davis demonstrates, dominated early modern utopianism. So ये utopia के बहुत सारे literature pieces हैं. One was Morse, one was the City of the Sun, and one we are talking about is J.C. Davis. Let's say. And utopian homogeneity remains a familiar theme well into the 20th century. ठीक है, यूटोपियन होमोजेनिटी रिमेन्स अ फेमिलियर थिंग, 20th सेंचुरी में भी ये चीज हो रही है। गिवन दीज कंसिडरेशंस इट इज नॉट अनरीजनेबल, अगेन नॉट अनरीजनेबल मतलब रीजनेबल, to take as our starting point here the hypothesis that utopia and dystopia evidently share more in common than is often supposed. तो काफी ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू व्हाट वी थिंक अदरवाइज। अपने को लगता है कि यूटोपिया अलग है, डिस्टोपिया अलग है, बट दे शेयर अ लॉट इन कॉमन कंपेयर टू व्हाट वी माइट थिंक। इंडीड दे माइट बी ट्विंस, राइट, दे माइट बी ट्विंस बोल रहे हैं। द प्रोजेनी ऑफ द सेम पेरेंट्स हो सकता है। Insofar as this proves to be the case, my linkage of both here will be uncomfortably close for some readers. Yet we should not mistake this argument for the assertion that all utopias are or tend to produce dystopias. ठीक है, yet we should not mistake this argument. तो यहाँ पे argument को हम लोग अलग इसको interpret नहीं कर सकते, that all utopias are or tend to produce dystopias. Those who defend this proposition will find that their association here is not nearly close enough. तो association is not nearly close enough.
For we have only to acknowledge the existence of thousands of successful international communities in which a cooperative ethos predominates and where harmony without coercion is the rule to set aside such an assertion. So again, a long sentence that we have here. Let's see. So what do we have here? For we have only to acknowledge the existence of thousands of successful international communities. तो बहुत सारे communities exist करते हैं जो successful हैं. In which a cooperative ethos मतलब everybody is being cooperative and everybody values the need to be uniform in nature in a way or adhere to rules, adhere to restrictions in general. ठीक है. Predominates and where harmony without coercion. So harmony without coercion होना चाहिए. Harmony मतलब everybody is living peacefully, but not because they are forced to live peacefully, right? Because they genuinely believe कि होना चाहिए करके. अगर बहुत सारा plentifulness है, if everywhere there is equality and so on, people will not feel the way to feel the need to revolt or to overachieve or something, right? वो सब नहीं होगा. तो everybody will stay peacefully, harmony में रहेंगे without coercion. Is the rule said to set aside such an assertion. Here the individual submersion in the group is consensual. तो मतलब उसको चाहिए करके वो ग्रुप में जाके मिक्स हो रहा है. Though this concept is not unproblematic, so is problematic. It results not in enslavement but voluntary submission to group norms. Harmony is achieved without harming others. So that is some wordplay here that we have. तो हो गया passage. ठीक है. Now this passage is a difficult one to read. If you even try to understand it again, you might not really be able to get more than maybe 2 or 3 lines worth of content. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं, what we are trying to say here is that we are trying to say that utopia and dystopia are fairly linked terms. अपने को लगता है यूटोपिया मतलब क्या होता है? यूटोपिया मतलब एवरीबडी विल लिव इन पीस, हार्मनी, सबके पास सिक्योरिटी होगा, ये सारी चीजें अपने को लगती है. बट व्हेन डू पीपल हैव दिस काइंड ऑफ और व्हेन डू पीपल बिहेव लाइक दिस विद इन अ सोसाइटी, when they are scared of something, when there are restraints placed on those people, तब जाके वो लोग ऐसे बिहेव करेंगे, अदरवाइज ये लोग ऐसे बिहेव करेंगे ही नहीं. सो दैट इज बेसिकली व्हाट यूटोपिया लुक्स लाइक. अब ये यूटोपिया जो होता है वो कब चलेगा? यूटोपिया विल वर्क व्हेन पीपल आर नॉट डिप्रेव्ड, पीपल आर नॉट विकेड, पीपल आर नॉट रनिंग बिहाइंड रिचेस, पीपल आर नॉट रियली बॉदर्ड बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज, राइट? ये सारी चीजें जब होंगी तब जाके पीपल विल हैप्पीली बी लिविंग इन अ सोसाइटी विदाउट फियरिंग रेस्ट्रिक्शंस, वो होगा. अब ये सारी चीजें लोग पुराने लिटरेचर में बोल चुके हैं. बट नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यूटोपिया एंड डिस्टोपिया आर मोर और लेस सिमिलर इन नेचर. एंड जितना लोग समझते हैं उससे ज्यादा उन दोनों में इंटरसेक्शन है. दे माइट बी ट्विंस करके बोला है, बट देन द ऑथर सेज दैट डू नॉट मिस्टेक दिस आर्गुमेंट फॉर द असर्शन दैट ऑल यूटोपियास आर डिस्टोपियास और ऑल यूटोपियास टेंड टू प्रोड्यूस डिस्टोपियास. तो ये गलत फहमी में मत लेना, इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. Also we are saying that जब भी मतलब someone tries to defend this, we should tell them that you can only defend this or you can only say that this works if it is consensual in nature. मतलब मुझे चाहिए करके मैं एक सोसाइटी में मिक्स हो रहा हूँ because I want it, that's why I am adhering to all the rules that are there and not because I am forced to adhere to rules. ठीक है. So this is basically what we are looking at in this particular passage. अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं. I know it's a difficult passage, but let's try to do the best of what we can do here, and let's try to see what is it that we can answer correctly. In some cases, I will tell you if I would have answered this particular question or not, but mostly it's going to be a difficult set. So let's see. Following from the passage, which one of the following may be seen as a characteristic of a utopian society? ठीक है. A society without any laws to restrain one's individuality. Which of the following may be seen? कुछ है तो पॉजिटिव बोला गया है, तो बाकी तीन तो नहीं होंगे यहाँ पे. A society without any laws, विदाउट एनी लॉस तो बोलने रहे, वी हैव बीन सेड दैट यहाँ पे रिस्ट्रेंट्स होंगे, रेस्ट्रिक्शंस होंगे तो ही लोग मतलब यूनिफॉर्मिटी के साथ डील करेंगे. सो दिस इज नॉट व्हाट इट सीम्स टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूटोपियन सोसाइटी बिकॉज रेस्ट्रेंट्स हैव टू बी देयर इज व्हाट पीपल आर सेइंग. Institutional surveillance of every individual to ensure his or her security and welfare. ठीक है. Institutional surveillance of every individual to ensure उसका security and welfare. तो क्या बोल रहे हैं हम लोग को? ये बताया गया है काफी ठीक तरीके से. We have been told that. Let me just check once where it is. Yeah, this one, right? Utopia appears to rely upon relentless transparency. मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. Everybody should know what everybody is doing. Everybody should know what you are doing. वो भी आ गया इसके अंदर. Repression of variety. Variety में curtailment of privacy. Utopia provides security, but at what price? Right? Security तो देता है, but at the price of you losing your privacy. So that is basically the problem. So institutional surveillance of every individual to ensure his or her security and welfare. Yes,
दिस कैन बी सीन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूटोपियन सोसाइटी. सर्वेलेंस होता है, पीपल फील प्रोटेक्टेड, बट एट व्हाट कॉस्ट? तो उनका सर्वेलेंस, सो बेसिकली सिक्योरिटी और वेलफेयर मिलता है, बट एट व्हाट कॉस्ट? इंस्टीट्यूशनल सर्वेलेंस हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम. A society where public power is earned through merit rather than through privilege. Public power होना ही नहीं चाहिए. That's what we had been told earlier, right? There should not be public power at all in this particular case. Let's see if we can find out where we had read this. Plenty and security on offer. Restraints would not have seen, but modern times के अंदर ये चीजें होती है. Curtailment of privacy is fine. We know that tradition is this one. It's okay. Inequalities are minimized, needs, vanity, and emulation are restrained, pricing equality, holding riches in contempt. The desire for public power is curbed. ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. द डिजायर फॉर पब्लिक पावर इज कर्ब्ड, मीनिंग पब्लिक के पास पावर होगा ही नहीं. तो यहाँ पे पावर इज अर्न थ्रू मेरिट रादर देन थ्रू प्रिविलेज, ये सारी चीजें आती ही नहीं. पावर को कर्ब किया जाता है. The regulation of homogeneity through promoting competitive heterogeneity. Heterogeneity हो ही नहीं रहा, competitiveness हो ही नहीं रहा. Homogeneity को promote किया जा रहा है या regulate किया जा रहा है by placing restraints. If you do not do this, then we will punish you or we will take some action against you. तो थ्रू restraint हो रहा है. It's not by promoting competitive heterogeneity. तो heterogeneity होने का चांस ही नहीं दे रहे हैं. Individuality and diversity at the cost of ये unity, order and homogeneity thus prevail at the cost of individuality and diversity. ठीक है, तो यहाँ पे heterogeneity is not something that is encouraged. So the correct answer will be option B, institutional surveillance of every individual to ensure his or her security and wealth. तो सिक्योरिटी तो मिल रहा है, वेलफेयर तो हो रहा है, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग सर्वेल्ड 24/7 बाय इंस्टीट्यूशंस हु आर देयर. Fine. So that's why option B will be the right answer. Of course, if I look at this, I may or may not want to solve this. I will be on the borderline. अगर बाकी तीन पैसेज अच्छे गए हैं, I will attempt this question. Otherwise, I will not attempt this particular question. सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं करता कैट के अंदर, मतलब आई सॉल्व इट, बट आई ऑलमोस्ट ऑलवेज नो दैट आई एम गोइंग टू गेट दिस रॉन्ग एंड आई ऑलमोस्ट ऑलवेज गेट दिस रॉन्ग. ठीक है, तो जनरली व्हाट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कैप्चर्स द नैरेटिव ऑफ द पैसेज. अब जनरली इसमें क्या होता है, दे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ करके उसको नैरेटिव में देना चाहिए. But sometimes cat will not give it to you in sequence. They will just say which sequence of words or which set of words will capture the narrative of the passage. तो अभी नैरेटिव के अंदर क्या क्या चीजें बोली है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं एंड देन वी शुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, सो इसको एक बार लेट्स जस्ट चेक वंस व्हाट डू वी हैव हियर. कर्टेलमेंट ऑफ प्रिवेसी, डिस्टोपिया, यूटोपिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी. अभी डिस्टोपिया पे बहुत ज्यादा बात की है क्या? वी हैव नॉट बीन टोल्ड अबाउट डिस्टोपिया प्रॉपरली कि डिस्टोपिया होता क्या है. वी हैव ओनली बीन टोल्ड अबाउट यूटोपिया. ठीक है, कि यूटोपिया ऐसे होता है, बट लोगों को जो लगता है यूटोपिया है, इट कैन बी डिस्टोपिया. We have not been told what dystopia looks like. So I will be very wary of dystopia, but of course there are three options with dystopia, so I can't be too wary of that as well. But yeah, if you look at it, curtailment of privacy. अब curtailment of privacy leads to dystopia, and then you get utopia, and then you get intentional community. ऐसे तो फ्लो नहीं है पैसेज का. The passage basically starts by talking about utopia, then बीच में कहीं पे तो it says that utopia possible है, but at what cost? Because it is available, made available at some cost. It is also similar to dystopia. अभी उसको ट्विन्स बोल सकते हैं बट नहीं भी बोल सकते हैं, राइट. सो वन लीड्स टू अनदर और वन इज प्रेजेंट विद द अदर, वन बोथ ऑफ देम आर क्रिएटेड साइमल्टेनियसली. ये सारी चीजें हम नहीं बोल सकते. ठीक है, तो पहले यूटोपिया आता है, देन वी टॉक अबाउट डिस्टोपिया, एंड देन वी से दैट whenever we are merging with a community, let's say, we should be doing it because it is consensual in nature. It should not be because we are forced to do that. तो ये बोला गया है लास्ट. फाइन. सो अब यहाँ पे डिस्टोपिया के बाद यूटोपिया doesn't really look nice. Plus dystopian in itself has not been discussed too much in this passage, so I'll not go for A. Second, relentless transparency. अब relentless transparency थोड़ा आगे जाके आता है. Homogeneity has been mentioned in the passage. Utopia has been mentioned in the passage. बट यहाँ पे जो इंटेंशनल कम्युनिटी वाला पार्ट है ना, वो ये ऑप्शन में नहीं है. जबकि ये अगर यहाँ पे होता तो इट वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्गर ऑप्शन. ठीक है, सो ये वाला भी आई विल नॉट से इट्स अ कंप्लीट ऑप्शन बिकॉज इंटेंशनल कम्युनिटी नहीं है. So transparency is required, homogeneity is required, utopia is there, but it should be intentional ना. You should intend to be a part of the community, तभी जाके उसको हम लोग यूटोपिया बोल सकते हैं. अदरवाइज हम लोग उसको यूटोपिया बोल भी नहीं सकते. व्हाट ए ऑथर इज ट्राइंग टू से. अभी यूटोपिया दिया है, देन सिक्योरिटी, देन डिस्टोपिया, देन कोअर्शन. अब यहाँ पे कोअर्शन इज स्टिल फाइन. इंटेंशनल कम्युनिटी का ऑपोजिट इज कोअर्शन बेसिकली. यूटोपिया इज स्टिल फाइन, सिक्योरिटी इज ऑल्सो फाइन, बट डिस्टोपिया यहाँ पे आ गया. Let's compare with option D and see what happens. Utopia, the first concept that has to be the first part of the passage. So these two look fine to me.
सिक्योरिटी हैज आल्सो बीन मेंशन इन द पैसेज एंड इन बोथ द ऑप्शंस, तो फिर भी ठीक है। होमोजेनिटी, अब होमोजेनिटी इज देयर, इंटेंशनल कम्युनिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टोपिया अपने को चाहिए कि होमोजेनिटी अपने को चाहिए? वी आर टॉकिंग मोर अबाउट होमोजेनिटी देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टोपिया ना। तो यूटोपिया सिक्योरिटी देता है, बट इट आल्सो एनकरेजेस और फोर्सेस होमोजेनिटी। इफ यू रियली वांट इट टू बी यूटोपिया, यू हैव टू बी इंटेंशनली अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। दैट्स व्हाई इंटेंशनल कम्युनिटी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यूटोपिया, व्हिच गिव्स यू सिक्योरिटी बट एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग बीइंग मेड होमोजेनियस, एंड इंटेंशनल कम्युनिटी होगा तो ही हम उसको यूटोपिया बोल सकते हैं। टफ वन, आई विल डेफिनेटली नॉट गो फॉर दिस इन द फर्स्ट राउंड, समथिंग लाइक दिस टर्न्स अप, अनलेस क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है। अगर क्रोनोलॉजी पूछा गया है एंड दिया है डेट्स वगैरह कुछ दिया है, तो ही आई विल गो फॉर दीज थिंग्स। Which of the four set of words, which sequence of words, I will definitely not expect any marks. I might solve it, but I will definitely not expect any marks from this particular question. ठीक है? So I hope the first two questions are clear. In case something is not clear, let me know. ठीक है? Third question देख लेते हैं. Which all the following statements can be inferred from the passage except that. तो तीन infer कर सकते हैं, एक infer नहीं कर सकते. That is basically the question that we have here. So let's see what the options are. It is possible to see utopias as dystopias with a change in perspective because one person's utopia could be seen as another person's dystopia. Makes sense in a way क्योंकि काफी जगह पे बोला गया है कि वो है करके. Utopian and dystopian societies are twins, the progeny of the same parents. अब यहाँ पे ट्विंस वाला पार्ट बताया गया है, बट आर ट्विंस नहीं बोला गया है, माइट बी कंसिडर्ड एज ट्विंस बोला गया है। द प्रोजेनी ऑफ द सेम पेरेंट्स ये बोला गया है, इंडीड दे माइट बी। Insofar as this proves to be the case, my linkage both here will be uncomfortably close for some reasons. Yet, मतलब the author does not agree with this statement. We should not mistake this argument for the assertion that all utopias are or tend to produce dystopias. ठीक है, सो ऑल यूटोपियाज और डिस्टोपियाज नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आर ट्विंस बोला गया है, बट पैसेज के अंदर माइट बोला गया है, एंड दैट इज फॉलोड बाय अ येट फ्रॉम द ऑथर, तो द ऑथर माइट नॉट रियली अग्री टू दिस, तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, ये फिर भी ठीक है। Utopian societies exist in a long tradition of literature dealing with imaginary people practicing imaginary customs in imaginary worlds. अब यूटोपियन सोसाइटीज काफी टाइम से डील कर रहे हैं लिटरेचर के अंदर, तो दैट तो वी सॉ एटलीस्ट 3 इंस्टेंसेस जहां पे अपने को यूटोपिया की बात की गई, जहां पे बताया गया है यूटोपिया पावर यूटोपिया होना चाहिए करके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर्स टाइम के अंदर होता था, फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन ऐसे कुछ होता था, सब पॉपुलेशन वाज देयर। उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर बिट जहां पे we are talking about Tommaso Campanella's The City of the Sun, relations are forbidden ऐसे कुछ होता है, greater simplicity of life is the result, desire for simplicity is related, more alike वगैरह बनते हैं। This model as J.C. Davis demonstrates, कुछ लिटरेचर लिखा हुआ है, dominated early modern utopianism, ठीक है, एंड 20th सेंचुरी में भी यूटोपियनिज्म होता है यहाँ। फाइन, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट, एंड यहाँ पे बेसिकली वी आर सेइंग दैट the hypothesis that exists is a lot of people have written literature about this, and a lot of people would be um, uh, talking about a lot of other people जो imaginary people है, जो imaginary customs करते थे in imaginary worlds. So this is still fine, you can still infer this from the passage because दो तीन लोगों के literature दिए हुए हैं and they spoke about ideal utopian is ideal societies that existed, right? So imaginary people practicing imaginary customs in imaginary. Many conceptions of utopian societies emphasize the importance of social uniformity and cultural homogeneity. Yes, हर सब कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए तो ही हम उसको यूटोपिया बोलेंगे, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई सी एंड डी आर बोथ ट्रू, वन इज आल्सो ट्रू बिकॉज सारे यूटोपिया, यू कैन सी यूटोपिया एज अ डिस्टोपिया इफ यू आर लुकिंग एट इट, yeah, in both its external and internal relations, indeed it seems perilously dystopian, it seems to be dystopian, so it seems मतलब you can visualize it, right? enough, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है that this argument you should not mistake this argument that both of them might be twins, progeny of the same parents, ये नहीं कर सकते। यहाँ पे we have been told that all utopias are or tend to produce dystopias भी नहीं देख सकते। Defend this proposition will find that the association here is not nearly close in, so association between utopias and dystopias is not very close in, that is what the author is trying to say. So in this case, it is possible to see, तो यहाँ पे बोला seemingly it would be dystopians as well, so we can also consider that। यहाँ पे the problem is that are twins करके बोला गया है, whereas the author starts by saying that indeed it might be true, yet, तो जैसे वो yet बोलता है ना, the author might not agree to the previous statement,
ठीक है। सो ऑथर बोलता है कि भाई ये वाला चीज ठीक है अगर हम लोग ये कंडीशन डालें तो, अदरवाइज इट इज नॉट। सो वी कांट इन्फर द सेकंड ऑप्शन फ्रॉम द पैसेज। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इन दिस केस व्हाट वी आर लुकिंग एट इज ऑल द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर मेड इन द पैसेज एक्सेप्ट दैट। कौन से आर्ग्यूमेंट को छोड़ के बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स को बनाया गया पैसेज के अंदर दिखाया गया। In Moore's time, there was plenty and security, so people did not need restraints that could appear unreasonable. Yes, बोला गया है, वहां पे बोला गया ना, could appear unreasonable करके। ओ, that could they did not need restraints. Okay, वहां पे वो नहीं बोला कि they did not need restraints। एक सेकंड ना, let me just check this once। Moore's time for much of the population, given the plenty and security on offer, such restraints would have seemed reasonable. सो प्लेंटी है और सिक्योरिटी है, बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रेंट्स रीजनेबल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रेंट्स थे ही नहीं। सो पीपल डिड नॉट नीड रिस्ट्रेंट्स नहीं है, द रिस्ट्रेंट्स अपीयर्ड रीजनेबल। सो डिड नॉट नीड रिस्ट्रेंट्स दैट कुड अपीयर अनरीजनेबल नहीं है, द रिस्ट्रेंट्स वेयर देयर बट दे अपीयर्ड रीजनेबल। कि भाई मतलब इतना तुम्हारे लिए सोसाइटी कर रहा है, इतना तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, तो फिर क्यों तुमको मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो तो क्या प्रॉब्लम है। So this is not made in the passage. It is not exactly what has been written in the passage. The tradition of utopian literature has shown societies in which it would be nearly impossible for anyone to be sinful or criminal. Beautifully done. डिप्रेविटी नहीं होगा करके बोला है। एंड एक और चीज था, डिप्रेविटी और विकेड नहीं होना चाहिए करके। सो ऑफन पोर्ट्रेट सोसाइटीज वेयर इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मैन टू बी दिस। तो वहां पे सिंफुल वगैरह हो नहीं सकते। सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली मेड इन दिस पैसेज, सो आई पुट अ yes here. Third, there have been thousands of communities where homogeneity and stability have been achieved through choice rather than by force. Yes, ये भी बोला गया है लास्ट में। So यहाँ पे जो बोला गया है, we only have to acknowledge the existence of thousands of successful international communities जहाँ पे cooperative ethos predominates and harmony without coercion is the rule. So ये भी ठीक है। So option C has also been mentioned in the passage completely. Option D, in early modern utopianism, the stability of utopian societies was seen to be achieved only with individuals surrendering their sense of self. The stability of utopian societies was seen to be achieved only with individuals surrendering to their sense of self. ये भी एक बोला गया है starting. Let's see. Yeah, this one. But for the fear of punishment, they would have nothing but contempt for the laws and customs of the society. तो punishment है करके वो लोग डर रहे हैं। Otherwise, they could be fine. Also, individuals surrendering their sense of self, वो देंगे तो ही मतलब you will basically be able to survive. तो यहाँ पे दिया था last वाला part. It results not only in enslavement but voluntary submission to group norms. So voluntary submission, voluntarily you should submit, consensual होना चाहिए, तभी मतलब you will be able to say that यूटोपियन सोसाइटी स्टेबल होंगे, अदरवाइज स्टेबिलिटी उनका निकल जाएगा। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मोर के टाइम में इट वाज नॉट एज इफ पीपल डिड नॉट नीड रेस्ट्रेंट्स, पीपल वर एक्सेप्टिंग ऑफ द रेस्ट्रेंट्स। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द डिफरेंस। अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये चार में से कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं था। मोस्टली आई वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन और आई वुड हैव अटेम्प्टेड इट हाफ हार्टेडली। मोस्टली आई वुड हैव गॉट ऑल फॉर रॉन्ग इन द टेस्ट। थैंकफुली ये मेरे स्लॉट में नहीं था, तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। But yeah, this was a difficult set to solve and explain. And if you get everything right in this one, then of course you are made for much better things in life. ठीक है, चलो सेकेंड पैसेज देख लेते हैं एक बार। Let's try to see this one. Cuttlefish are full of personality, as behavioral ecologist Alexandra Schnell found out. So full of personality, कुछ उनका personality होता है, like people, right? Personality होता है उनका कुछ तो। While researching the cephalopods' potential to display self-control, तो self-control दिखाता है cuttlefish. We don't know how. Self-control is thought to be the cornerstone of intelligence. तो अगर आप self-control दिखा पा रहे हो, तो आप intelligent हो. As it is an important prerequisite for complex decision making and planning for the future. So self-control जो होता है ना, that is very important for intelligence to be perceived in a way, says Schnell. अब Schnell's study used a modified version of the marshmallow test. अब marshmallow test बहुत लोगों को पता होगा, तो it is a straightforward concept जो यहाँ पे explain किया है. During the original marshmallow test, psychologist Walter Mischel presented children between age 4 and 6 with one marshmallow. उनके सामने एक marshmallow रख दिया. He told them that if they waited 15 minutes and did not eat it, he would give them a second marshmallow. तो 15 मिनट तक आप अगर शांति से बैठोगे ना, आपको एक और मार्शमेलो मिलेगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन बेसिक। A long-term follow-up study showed that the children who waited for the second marshmallow had more success later in life. So because you were
You were exhibiting self control at a younger age, you were exhibiting restraint at a younger age, आगे जाके वो प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं. अब कोरिलेशन इम्प्लाइज कॉजेशन वो अलग स्टोरी है, बट whatever study has been conducted, it has shown that जिन भी लोगों ने 15 मिनट्स वेट किया फॉर द सेकंड मार्शमेलो, these people ended up achieving more success in life. ठीक है. The cuttlefish version of the experiment looked a lot different. cuttlefish में भी ये क्या था, restraint दिखाने के लिए स्टडी किया होगा. The researchers worked with 6 cuttlefish under 9 months old and presented them with seafood instead of sweets. तो marshmallow की जगह पे seafood दे दिया because cuttlefish might like seafood. Preliminary experiments showed that cuttlefish's favorite food is live grass. Favorite food is live grass. उनको बहुत पसंद है live grass. Live grass shrimp. While raw prawns are so-so. They are okay with it. And Asian shore crab is nearly unaccepted. ठीक है? So they will not like it at all. सो ये वाला तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है. दिस इज लाइक ओके, दे कैन लिव विद इट, इट्स फाइन, बट दिस इज समथिंग दैट दे लव. स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो लाइव ग्रास श्रिम्प उनको बहुत पसंद है. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Since the researchers couldn't explain to the cuttlefish that they would need to wait for the shrimp, right? अब बच्चों को तो बता दिया कि भाई तुमको सेकंड मार्शमेलो के लिए 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा. इफ यू वेट देन यू विल गेट वन मोर मार्शमेलो. ये बता के छोड़ दिया. दे कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, दे नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, राइट? तो ये सारी चीजें पता थी. बट cuttlefish को तो ये सब बता नहीं सकते. They trained them to recognize certain shapes that indicated when a food item would become available. उनको शेप दिखाए. The symbols were pasted on transparent drawers so that the cuttlefish could see the food that was stored inside. उनको food दिखता था और symbol draw किए थे drawers के ऊपर. One drawer labeled with a circle to mean immediate held raw king prawn. So immediate था यहाँ पे raw king prawn. बट रॉ किंग प्रॉन का क्या सीन था, रॉ क्रीम प्रॉन जो था वो सोसो था यहाँ पे. सो ये जो सर्कल बनाया, तो दे सर्कल विल बेसिकली बी अ सोसो कैटेगरी, ये बोल रहे हैं हम लोग. अनदर ड्रॉर लेबल विद अ ट्रायंगल टू मीन डिलेड. तो ये वाला इसका मतलब है इमीडिएट, मतलब अभी के अभी इसको रिलीज करेंगे लेट से. अनदर ड्रॉर लेबल ट्रायंगल वाज लेबल विद अ ट्रायंगल टू मीन डिलेड, इसको डिले कर दिया. हेल्ड लाइव ग्रास श्रिम्प, तो ये तो इनको अच्छा लगता है. ड्यूरिंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट स्क्वायर लेबल्स मीन नेवर, तो इसको ना ओपन ही नहीं करेंगे कभी भी. दैट इज व्हाट इट मींट. सो बेसिकली पहले वो ट्रायंगल ओपन करेंगे, देन वो सर्कल पहले ओपन करेंगे, ट्रायंगल बाद में ओपन करेंगे, एंड स्क्वायर ओपन ही नहीं करेंगे. विल नेवर बी ओपन. ठीक है. अभी कटलफिश को देख देख के समझ में आ गया होगा कि पहले सर्कल खुलता है, फिर ट्रायंगल खुलता है, और स्क्वायर वाला तो कभी खुलता ही नहीं है ट्रे, राइट? सो दैट इज व्हाट ए कटलफिश कुड हैव understood after a while. That is what this means. If their self-control is flexible and I hadn't just trained them to wait in any context, ठीक है, अगर उनका self control flexible होता and I hadn't just trained them to wait in any context, you would expect the cuttlefish to take the immediate reward in the control even if it is the second preference. तो इमीडिएट वाला जैसे ही खुल जाता कटलफिश उसको ले लेता. अगर कटलफिश को पता है कि भाई मतलब मेरे को उनको उनके पास डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही अगर नहीं है, राइट? एंड इफ द सेल्फ कंट्रोल इज फ्लेक्सिबल, मतलब सेल्फ कंट्रोल फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जो भी सामने दिखेगा मैं उसको ले लूं, फ्लेक्सिबल है. बट इफ योर सेल्फ कंट्रोल इज गुड, राइट, इवन इफ योर सेल्फ कंट्रोल इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट्स रिजिड, बहुत सेल्फ कंट्रोल है, देन यू विल वेट फॉर द डिलीशियस स्टफ टू कम आउट इवन इफ इट मींस वेटिंग फॉर समथिंग. ठीक है. बट यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल फ्लेक्सिबल होता तो कटलफिश जाके जो भी प्रॉन बाहर खुला है वो खा लेता चुपचाप जाके. फाइन. To take the immediate reward in the control even if it is a second preference, says Schnell, and that's what they did. तो कटलफिश ने ये किया. Cuttlefish went and ate the prawns. भले उनका second preference है, they could not wait for some time. That showed the researchers that cuttlefish wouldn't reject the prawns if it was the only food available. तो only food भी अगर prawn हो तो वो खा लेते, वैसा है. In the experimental trials, the cuttlefish didn't jump on the prawns if the live grass shrimp were labeled with a triangle. Many waited for the shrimp drawer to open up. तो experimental trial जब किया गया ना, तो cuttlefish को भी समझ में आ गया कि भाई triangle लिखा है ना, तो ये थोड़ा लेट खुलेगा, बट खुलेगा जरूर. सो ग्रास श्रिम्प जो था, लाइव ग्रास श्रिम्प्स जो थे, वो वेट करके देख रहे थे कि भाई मतलब हाउ व्हेन इज दिस गोइंग टू ओपन अप, एंड व्हेन इट ओपन्स अप आई विल ईट श्रिम्प. Each time the cuttlefish showed it could wait, the researchers start another 10 seconds on to the next round of waiting before releasing the shrimp. So cuttlefish ने wait किया कि triangle है खुलेगा, then I will eat it. I will not eat this crab that is out there. Now what did the researchers do? और थोड़ा खिलना चालू किया, बोला कि और 10 सेकंड डिले करते हैं, let's see how much time these cuttlefish are waiting.
The longest that a cuttlefish waited was 130 seconds. तो 130 seconds a cuttlefish waited कि triangle खुलेगा. Schnell says that the cuttlefish usually sat at the bottom of the tank and looked at the two food items while they waited. But sometimes they would turn away from the king prawn as if to distract themselves from the temptation of the immediate prey. तो कभी कभी तो दोनों को देखते थे, अच्छा इधर इधर प्रॉन्स है, वहां पे श्रिम्प है, प्रॉन्स तो खुला है बट श्रिम्प खुलेगा तो आई विल गो टू द श्रिम्प. But in a lot of situations, sometimes what happened was they would turn away from the king prawn. तो king prawn को देखते ही नहीं थे. They would ignore the king prawn and maybe tell themselves the story that the king prawn does not exist. ठीक है, टेम्पटेशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. In past studies, humans, chimpanzees, parrots, and dogs also try to distract themselves while waiting for a reward. Not every species can use self control, but most of the animals that can share another trait in common. Long social lives. अब ये कुछ तो नया चल गया यहाँ पे. ठीक है, नॉट एवरी स्पीशीज कैन यूज सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल तो कर नहीं सकते, बट अ लॉट ऑफ एनिमल्स शेयर अनदर ट्रेट इन कॉमन. तो क्या होता है सब एनिमल्स के बीच का ट्रेट? लॉन्ग सोशल लाइफ. दे विल रिमेन इन अ सोसाइटी, दे विल रिमेन विद अदर members of their species. Cuttlefish, on the other hand, are solitary creatures that don't form relationships even with mates or young. Cuttlefish are solitary creatures. बहुत सारे creatures होते हैं जो long social lives जीते हैं, but cuttlefish solitary creatures होते हैं. We don't know if living in a social group is important for complex cognition. We don't know if living in a social group is important for complex cognition. तो group में रहना जरूरी है क्या for you to be able to solve or perceive complex things in life? Unless we also show these abilities are lacking in less social species. तो क्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पे? We don't know. अभी तक तो मेरे को पता नहीं है. If living in a social group is important for complex cognition. ठीक है, तो सोशल ग्रुप में रहना इज अ मैंडेटरी कंडीशन या इंपॉर्टेंट. तो सोशल ग्रुप में रहना इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निशन. तो ये मेरे को पता नहीं है कि नहीं कर, अनलेस जब तक हम लोग ये नहीं दिखा देते दैट दोस एबिलिटीज आर लैकिंग इन लेस सोशल स्पीशीज. तो अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई कॉग्निटिव एबिलिटीज अगर नहीं होंगे इन लेस सोशल स्पीशीज, देन वी कैन से दिस इज टिपिकली ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग मैथमेटिकल और लॉजिकल इन नेचर. इफ पी देन क्यू से अपने को क्या इन्फरेंस मिलता है या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी. सो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर सोशल है तो कॉग्निटिव सोशल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निशन, ये बोल रहे हैं. विच बेसिकली मीन्स दैट इफ कॉग्निशन और कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं है देन दे आर नॉट सोशल. सो नॉट कॉग्निशन इंप्लाइज नॉट सोशल. इसका कुछ करना नहीं है, जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट इट एंड टेल योरसेल्फ दैट दिस इज हाउ यू रीड दिस. अभी पूरा स्टोरी समझ में, पूरा स्टोरी पढ़ के समझ में क्या आया? मार्च में टेस्ट, ऐसा कोई तो टेस्ट किया था. मार्च में टेस्ट टॉक्स अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन. इफ द चाइल्ड वेट्स फॉर जो भी 15 मिनट्स, तो उसको एक और मार्च में मिल जाते हैं, 2 मार्च में मिल जाते हैं. बट अगर उसने जल्दी से 1 मार्च में खा लिया तो उसको और कुछ मिलेगा नहीं. The children who successfully restrained themselves and did not give or basically give in to that temptation achieved better in life is what the study hinted at. कटल के केस में तो वही होता है. पहले तो कटल फिश ने रॉ प्रॉन देखा और चालू कर दिया खाना उसको. बट देन दे फिगर्ड आउट दैट ट्रायंगल के अंदर जो श्रिम्प होता है ना, दैट इज टेस्टियर एंड वो कभी ना कभी तो ओपन होगा, बट लेट ओपन होगा. सो द कटल फिश स्टार्टेड वेटिंग फॉर द श्रिम्प वाला चेम्बर टू ओपन. 130 सेकंड्स तक भी वेट कर. ठीक है, अभी ये पूरा स्टोरी हो गया. नाउ हाउ डिड दे यूज्ड टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन? कभी कभी तो दे डिडंट बॉदर, दे जस्ट लुक्ड एट द ट्रायंगल एंड द सर्कल एंड लाइक ठीक है खुलेगा तो खा लेंगे. But quite a few times it so happened that the cuttlefish turned away from the prawns so as to not get tempted with the sight of consuming or the sight of prawns. ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए. Now a lot of species do this, ये बोला गया है. बट बहुत सारे स्पीशीज में एक चीज और कॉमन होती है, सोशल लाइफ. अब यहाँ पे पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया पैसेज ने. सोशल लाइफ की बात ही नहीं की, सडनली इट बिकम सोशल लाइफ इन नेचर. सो सोशल लाइफ बहुत सारे लोग लिव करते हैं, या एक ट्रेट होता है कि सोशल लाइफ लिव करने हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज कटल फिश तो सॉलिटरी क्रीचर्स हैं. अभी तक अपने को पता नहीं कि सोशल ग्रुप में रहना जरूरी है क्या फॉर कॉग्निशन, राइट? वो जरूरी है कि नहीं अपने को पता नहीं. द डे वी से दैट जिसके अंदर कॉग्निशन नहीं है वो नॉट सोशल है, जिस दिन हम लोग ये प्रूव कर देंगे, देन वी विल इन्फर द अदर पार्ट व्हिच इज बेसिक लॉजिक, राइट? पी इंप्लाइज क्यू मींस दैट नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस एंड सी व्हाट हैपेंस. Fine. All of the following constitute a point of difference between the original and the modified versions of the marshmallow test. ठीक है, सो कौन सा पॉइंट है जो अलग है कंपेयर टू दी बिटवीन द ओरिजिनल एंड द मॉडिफाइड वर्जन? ऑप्शन ए, द फॉर्मर कोरिलेटेड सेल्फ कंट्रोल एंड फ्यूचर सक्सेस, ओके, while the latter correlated self control and survival advantages. अब ये survival advantages कहां से आ रहे?
कहीं पे सर्वाइवल की बात ही नहीं की है पूरे पैसेज के अंदर। तो सर्वाइवल एडवांटेजेस तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल, राइट? सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नो, फर्स्ट वाला पार्ट फिर भी ठीक है, सेल्फ कंट्रोल फ्यूचर सक्सेस की बात कर रहे थे, बट इसके अंदर कटल फिश वाले में तो हम लोग सर्वाइवल एडवांटेज की बात ही नहीं कर रहे। द फॉर्मर वाज परफॉर्म्ड ओवर अ लॉन्गर स्पैन टाइम देन द लेटर। यस, पहले काफी टाइम तक क्या था, यहाँ पे सिर्फ 6 कटल फिश को देखा था और 130 सेकंड में उनका खत्म कर दिया खेल बेसिकली। So if you look at what we are talking about here, um, yeah, ages 4 and 6 के लिए क्या था एंड 15 मिनट्स का ये क्या था, अ लॉन्ग टर्म फॉलोअप स्टडी भी किया वहां। बट यहाँ पे if you look at it, the researchers work with 6 कटल फिश, बहुत ही कम कटल फिश थे, 9 मंथ्स की कटल फिश थे बेचारे, एंड दैट्स बेसिकली व्हेन दी स्टडी एंडेड। तो लॉन्ग टर्म सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कुछ भी स्टडी नहीं किए थे। ठीक है, सो यहाँ पे दी फॉर्मर वाज परफॉर्म्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम स्पेन देन दी लैटर। यस, दिस इज ट्रू। The former had human subjects, the latter had cuttlefish. This is also absolutely true. The former used verbal communication with its subjects, the latter had to develop a symbolic means of communication, triangle, circle, square. क्योंकि उनको बोल नहीं सकते कि भाई आप वेट करोगे तो ट्रायंगल खुलेगा, नहीं बोल सकते। This is also fine. So the only thing that we cannot say with confidence that it is a point of difference is option A. So the answer here should be option A for this particular question. Second question देख लेते हैं। Which one of the following, if true, would best complement the passage's findings? ठीक है, तो पैसेज के फाइंडिंग्स को कॉम्प्लीमेंट कब करेंगे, मतलब व्हाट विल कॉम्प्लीमेंट द पैसेजेस फाइंडिंग्स, दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी। Cuttlefish wait longer than 100 seconds for the shrimp drawer to open up. Cuttlefish wait longer than 100 seconds for the shrimp drawer to open up. वो तो हुआ है, 130 सेकंड्स तक भी लोगों ने वेट किया है। सो इफ ट्रू वुड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट द पैसेजेस फाइंडिंग्स क्या है? पैसेज के फाइंडिंग्स हमने को पता नहीं, राइट? वी नो दैट कहीं पे अगर बोला गया दैट वी विल बी एबल टू प्रूव, लास्ट में क्या होता है पैसेज के अंदर, वी डोंट नो इफ इट इज बिकॉज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोशल सेटअप, राइट? सोशल ग्रुप and complex cognition. तो social group leads to complex cognition. This is not something that we knew. So agar somehow we figure out that cuttlefish are handling complex things and we also know that they are a part of a social group, we are more or less sorted. तो यहाँ पे अगर देखते हैं, वन तो कटलफिश वेट लॉन्गर देन 100 सेकंड्स फॉर द श्रिम्प ड्रॉ टू ओपन अप, दैट इज नॉर्मल। इफ ट्रू वाला पार्ट इसमें आता ही नहीं है, राइट? सो इट इज कंसिस्टेंट विद द पैसेंजर्स फाइंडिंग्स। नया मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे कुछ नया मिलना चाहिए वहां। कटलफिश लिव इन बिग ग्रुप्स दैट एग्जिबिट सोशबिलिटी। अगर ये हो रहा है तो वो लोग कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन भी प्रोसेस करते होंगे। सो दिस विल एड टू द होल आइडिया दैट cuttlefish can wait for longer, are slightly thoughtful in nature when it comes to these kind of things। तो ये अपने को पता चल जाएगा। कटलफिश कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब इससे कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम मतलब इससे प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज देन कटलफिश को पता है ना, ट्राइंगल मतलब डिलेड, सर्कल मतलब इमीडिएट, एंड स्क्वायर मतलब इट विल नॉट ओपन एट ऑल। ये तो उनको पता चल ही नहीं सकता, बट दे आर एबल टू फिगर इट आउट, विच मीन्स दैट दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ज्योमेट्रिकल शेप्स। कटलफिश आर इक्वली फॉन्ड ऑफ लाइव ग्रास, श्रिम्प एंड रॉ प्रॉन। ये भी गलत है। कटलफिश वेट कर रहे हैं ना श्रिम्प ड्रॉ ओपन होने के लिए, तो फिर व्हाई शुड दे बी इक्वली फॉन्ड ऑफ लाइव ग्रास, श्रिम्प एंड रॉ प्रॉन? फिर तो अपना पैसेज कॉम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, फिर तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। दी एंटायर हाइपोथेसिस विल बी क्वेश्चन ना कि भाई तुमने मतलब फिर लाइव ग्रास, श्रिम्प और रॉ प्रॉन रखा क्यों उसके अंदर? सो दिस इज नॉट, ये वाला पार्ट विल चेंज द स्टडी। If this is true, then big groups exhibit sociability, सोशल ग्रुप में रहने से कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन बढ़ता है। कटलफिश का कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन बहुत अच्छा है बिकॉज दे आर लुकिंग एट ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, दे आर विथहोल्डिंग देमसेल्व्स। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। फाइन, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। Which one of the following scenarios would the cuttlefish's behavior demonstrate self control? तो सेल्फ कंट्रोल कब दिखा? Asian shore crabs and raw prawns are simultaneously released while a live grass shrimp drawer labeled with a triangle is placed in front of the cuttlefish to be opened after 1 minute. तो अब यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल दिख सकता था ना, बिकॉज दी कटलफिश लाइक्स लाइव ग्रास, श्रिम्प उसको बहुत पसंद है, तो 1 मिनट के बाद खुलने वाला है। सो द कटलफिश विल वेट। बाकी दोनों उसके सामने अवेलेबल है, एशियन शोर क्रैब भी अवेलेबल है, रॉ प्रॉन्स भी अवेलेबल है, बट द कटलफिश विल नॉट गो फॉर ईदर ऑफ। सो दिस विल डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ कंट्रोल। ऑप्शन बी देखते हैं। रॉ प्रॉन्स आर रिलीज्ड while a live grass shrimp drawer labeled with a square is placed in front of the cuttlefish। अब cuttlefish को समझ में आ गया कि भाई स्क्वायर लिखा है मतलब ये तो कभी भी ओपन नहीं होने वाला।
सो अगर ओपन ही नहीं होने वाला, देन द कटल फिश विल हैव टू मेक डू विद व्हाटएवर द कटल फिश इज सीइंग ना, तो फिर वो रॉ प्रॉन्स खा लेगा। तो हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम? सेल्फ कंट्रोल कहां से आ गया? इफ इट इज नॉट गोइंग टू ओपन, देन देयर इज नो सेल्फ कंट्रोल। सो ये वाला ऑप्शन राइट नहीं है। Live grass shrimp are released while two prawn drawers labeled with a circle and a triangle respectively are placed in front of a cuttlefish. The triangle labeled drawer is opened after 50 seconds. How does it matter? भाई live grass shrimp तो उसको पसंद है ना, और उसको वेट करने से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। If the cuttlefish waits, then it should get some reward ना. The reward is getting a better treat. अगर उसको पहले ही अच्छा ट्रीट मिल रहा है तो वेट कर, उसको क्या मिलने वाला है? वो प्रॉन मिलेगा तो वो क्या करेगा उसका? ठीक है। सो द cuttlefish is interested in live grass shrimp. It's like telling the kids, I will give you two marshmallows and then you have to sit for 15 minutes and wait for a box of something which the kid might not even like. The kid will be like, give me two marshmallows, I will eat and I will go, ना बॉक्स तुम रख लो अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए। सेम लॉजिक। Last option, raw prawns are released while an Asian shore crab drawer labeled with a triangle is placed in front of the cuttlefish to be opened after 1 minute. Again, raw prawns और Asian shore crab में कौन सा वाला ज्यादा उसको पसंद है? Let's check this once. Yeah, raw prawns are okay and Asian shore crab उसको खाना ही नहीं है। ठीक है, so Asian shore crab is anyway the worst thing. तो अगर एशियन शोर क्रैब को ट्रायंगल लगाया और थोड़ा बाद में ओपन किया, व्हाई विल द कटलफिश वेट फॉर दैट एशियन शोर क्रैब? इट डज नॉट इवन लाइक इट। अगेन इट्स लाइक टेलिंग द चिल्ड्रन जो मार्शमेलो टेस्ट के लिए आए थे, भाई तुम ना ये मार्शमेलो खा लो एंड इफ यू वेट फॉर 15 मिनट्स आई विल गिव यू अ बोल ऑफ ब्रोकली। तो बच्चे तो नहीं खाएंगे ना ब्रोकली, दे विल नॉट वांट ब्रोकली, दे विल हैव देयर मार्शमेलो एंड गेट आउट। राइट, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज है। यू आर गिविंग समथिंग दैट द कटलफिश प्रेफर्स and hiding something and telling them that it is going to come out after some time which they don't really like. Why will they wait for it? So this is also not right. So the correct answer is option A. Asian shore crabs and raw prawns, दो चीजें जो उसको रिलेटिवली अच्छी नहीं लगती उनको रिलीज किया, एंड लाइव ग्लास श्रिम्प ड्रॉर को ट्रायंगल बना के रख दिया, so the cuttlefish knows कि ये ट्रायंगल कभी तो खुलेगा, and when it opens I will go and eat it. If the cuttlefish shows self control, it will wait for it. अगर नहीं दिखाएंगे तो चलिए खा लेंगे। ठीक है। Last question of the day. Which of the following cannot be inferred from Alexandra Schnell's experiment? क्या infer नहीं कर सकते? Intelligence in a species is impossible without sociability. अब यहाँ पे अलेक्जेंड्रा स्नेल के एक्सपेरिमेंट के अंदर सोशेबिलिटी आया कहां से? सोशेबिलिटी तो आया ही नहीं है। सो इम्पॉसिबल, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये तो बोला है कि हमको पता नहीं ना, सोशेबिलिटी विल लीड टू इट और नॉट, वी डोंट नो, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। सो कैन वी इन्फर दिस? इट्स क्वेश्चन। सेकंड, like human children, cuttlefish are capable of self-control. Yes, 130 seconds तक रुका बेचारा cuttlefish. So yes, it can be inferred. Third option, cuttlefish exert self-control with the help of diversions. Yes, कुछ जगह पे cuttlefish ने साइड में देखा और रॉ क्रैब की तरफ देखा ही नहीं, रॉ प्रॉन्स की तरफ देखा ही नहीं, ये भी ठीक है। cuttlefish exercise choice when it comes to food. Yes, they do. श्रिम्प के लिए वेट किए वो लोग और उनके प्रेफरेंसेस थे, भाई श्रिम्प चाहिए फिर क्रैब चाहिए फिर प्रॉन्स चाहिए फिर क्रैब चाहिए, जो भी ऑर्डर था। सो ऑल थ्री आर फाइन। ये वाला जो है ना, ये इम्पॉसिबल तो बोला नहीं है। इनफैक्ट लास्ट में वी विल नॉट बी एबल टू प्रूव एनीथिंग अनलेस समथिंग हैपेंस। सो द करेक्ट आंसर हियर शुड बी ऑप्शन ए फॉर दिस वन। ठीक है। सो the passage that we have. Fine, I'll wait about 30 seconds. In case there is any query or doubt, I'll solve this. Otherwise, we should be done for the day. And again, for those of you who are here till the end and who are watching this video, we will be having a very interesting session this Friday, which is going to be the live mock solving session, which is going to be a dash cat. Right, a crack you mock is what we are going to attempt on this channel. It's, I think, happening for the first time ever that anybody is doing something like this. So stay tuned for that. Make sure that you turn up for the session. If you are a crack subscriber or a user, make sure that you take the test before you turn up for the session. I have heard that it is particularly difficult. So let's see how that goes. Right. And otherwise, we will be coming up with some exciting news for you later this week. More details will be revealed soon. So stay tuned on the channel for that update. And I'll see all of you again tomorrow for the next daily drill. All right. So no doubts till now. If there's anything, let me know in the comments section and I will address those queries. Okay. Rubesh is saying the last statement of this RC I couldn't understand. See, again, not required to understand, but we don't know if living in a social group is important for complex cognition. मतलब अपने को पता ही नहीं है, right? So let's say, for example, someone says that you are staying in a social group. Someone says that you are in a group of people, ठीक है? And because you are living in a group of people, you also have good cognition. Cognition का मतलब क्या है? In simpler words, you can think,
रिएक्ट टू थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर। ठीक है, सो कॉग्निजाइज कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। रिकॉग्नाइज करते हैं जो बोलते हैं ना, सेम रूट है यहाँ पे। सो कॉग्निशन मतलब यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोशल ग्रुप, इट एनहांसेस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ये स्टेटमेंट है, बट वी डोंट नो इफ दिस इज ट्रू। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर तुम सोशल ग्रुप में हो तो तुम कॉग्निशन अच्छे से कर सकते हो, समझ सकते हो चीजों को। इज दैट समथिंग दैट वी कैन से विद सर्टेनिटी? वी कांट, अनलेस जिस दिन हम लोग ये दिखाएंगे, द डे व्हेन वी शो दैट दोस एबिलिटीज आर लैकिंग इन लेस सोशल स्पीशीज। मतलब हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें कोई स्पीशीज को देखते हैं, यार ये स्पीशीज जो है ना, दैट स्पीशीज इज अ सॉलिटरी स्पीशीज, वो ना सोसाइटी में रहता ही नहीं है, तो वो डम होगा, उसको समझ में नहीं आता, right? If we figure that out, that there exists a species that stays in solitary confinement, solitary रहता है वो, it does not stay with a group of people, a group of similar species के जो भी organisms, then वो डम है, उसको समझ में नहीं आता वो चीज। जिस दिन हम लोग ये बोलेंगे उस दिन ये वाला भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आई गिव यू अ पैरेलल, ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड पैरेलल है, बट I will tell you something. So let's having curd is important for scoring good marks. ये स्टेटमेंट है। कैन दिस बी प्रूव्ड? नहीं प्रूव कर सकते ना, वी कांट प्रूव दिस। वी डोंट नो इफ हैविंग कर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, बट वी विल बी एबल टू प्रूव इट समडे। कब प्रूव करेंगे? जब हम लोग ये बोलेंगे कि समवन डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स because they did not have curd, or someone did not score good marks and they did not have curd. Right? So the day on which you prove this, right? Someone did not score good marks, then they did not have curd. You will also be able to prove the other way around. कि having curd is an important criterion for scoring good marks. ठीक है? In other words, we are saying that if you did not score good marks, it can be attributed to you not consuming curd, which tells you that consuming curd is an important criterion for scoring good marks. तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज बताया गया है, दैट इफ यू आर इन अ सोशल ग्रुप, यू आर you are able to understand things, chalo, but the day I prove that if you are not social, you are less understanding, if you are not social you cannot understand things, that day I would have proved the other thing as well. Now this is basically classic P implies Q. If P then Q agar hoga na, the one thing that I can infer is if Q does not happen then P does not happen. That is what we can infer. So ये logical condition है, right? So sometimes people say, right, if I take an umbrella then it will rain. If I take an umbrella, it will rain, which means that if it does not rain, I would not have taken an umbrella. That kind of it. Fine. Have you understood this or are you more confused? But then you can let go. Well, the point is for you to understand, we don't know if society mein rehna is important for complex potential. You forget about this. We just know that we just figured out that we don't know if these two things are related. That's it. Fine. चलो ठीक है, ऑलराइट। सो ऑन दैट नोट we'll close the session. Thank you everyone for turning up. I'll see you again tomorrow for the next with the next session. So make sure that you take the test before you turn up for the session. And yeah, we'll meet again tomorrow with the next daily tip. ठीक है, चलो, ऑलराइट। Thank you everyone for turning up and bye everyone. Have a great evening ahead.